Good morning dear students, welcome to the e-learning class organized by Global Coaching School Curry. I hope you all have enjoyed the two big celebrations like Raksha Bandhan as well as Eid with full of joy. So as you know that in the previous class we have completed chapter 5. Chapter 5 we have completed, that was arithmetic progression. And the next chapter is chapter 6, that is triangle. But today means now we are not going to take that chapter 6 because we have to identify which of the theorem are already deleted by the CPSC and all these things, and even some geometrical things are there which we will do if school will start as early as possible. So in the school, if not, it will take some time. So definitely in upcoming classes we will have this. So that's why today I am going to start a very important and very interesting chapter, chapter 7. That is 7th chapter is co-ordinate geometry. Same name of the chapter was there in class 9 also. 9th class में भी आपके पास था coordinate geometry. Chapter 3 it was, जहाँ हमने सिर्फ बेसिक सीखा था कि coordinate geometry क्या होता है, Cartesian plane क्या होता है, origin क्या होता है, ordered pair क्या होता है, x coordinate क्या होता है, y coordinate क्या होता है, zero होगा तो क्या होगा, कब line parallel होगी. This was all we have seen. Even how to plot the points on the Cartesian plane. ये यहाँ तक की चीजें आपको 9th क्लास में ऑलरेडी सिखा दी गई हैं. But you know that it's a long time. So that's why today in the class I am just going to revise. I have already prepared a video for class 9. मैंने 9th क्लास के लिए वीडियो तैयार किया था जिसमें कंप्लीट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है. तो आज आप पहले वो वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक सीखें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियोस हम शुरू करेंगे व्हाट आर द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10 इन दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है इसमें कौन से चैप्टर दिए हुए हैं नए टॉपिक्स. अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ देखें तो एक बेसिकली आपके क्लास 10 में 3 टॉपिक्स हैं. वन, डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट किए गए दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं. हाउ टू फाइंड द रेशियो, कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट को या लाइन को किसी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकाल सकते हैं. एंड लास्ट टॉपिक वाज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मींस नॉट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मींस हाउ टू फाइंड द area of a triangle, not circle. How to find the area of a triangle when all three vertices are given. But as per the new syllabus given by CPSC, that last topic, how to find the area of a triangle in coordinate geometry, has been deleted. So that's why we are going to discuss only two exercises, exercise 7.1 and 7.2. So today, let's see the next, means the basic of complete coordinate geometry, which I have made a video for class 9. So please enjoy it. Look at it. You can see I have drawn a Cartesian plane, a horizontal line, that is XOX dash, XOX dash or X dash OX dash, and YOY dash, a horizontal line. Where if you consider this blackboard or green board as a plane figure, so these are the lines. When we draw a horizontal line and a vertical line on any plane figure, suppose I will draw here also, this is a plane figure. If I will draw these two lines, so see, this plane figure has been divided into 4 parts: first, second, third and fourth. So as I told you, today we will just get the information about Cartesian plane. When we draw this horizontal and this vertical line on a Cartesian plane, so this plane is known as Cartesian plane. This plane is known as Cartesian plane. When we draw a horizontal and a vertical line, so the plane is known as Cartesian plane. And after drawing this horizontal and vertical line, and one more thing, this horizontal line is known as, these are the information only which we have to correct. X-axis. Horizontal line is known as X-axis, which is also represented by XOX. And the vertical line which you can see here, this is the vertical line, is known as Y-axis. Horizontal line is known as X-axis,
and the name of the each part is co-ordinate. Name of the each part is quadrant. So there are four quadrants. This one, this one, this one, this one. And the name of the quadrant is the anti-clockwise. This is first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant, and it is fourth quadrant. So it means when we draw a Cartesian plane on a surface, the surface has been divided into four parts, and each part is known as quadrant. Getting my point? So what we have studied, Cartesian plane is clear, quadrant. When we draw a vertical and a horizontal line, each part is known as quadrant, and horizontal line is known as x-axis, and the vertical line is known as y-axis. Get it? Let's get some more information. You will see one point is there on both the axes. The plural form of axis is axis. E-A-X-E-S. Axis. The plural form of axis is axis. Okay. So when you can see this x-axis and y-axis both are intersecting at one point, and this point is known as origin. Origin. The point where both the axes meet or both the axes intersect, this point is known as origin. Very much clear? One more thing you can see here. So there are four quadrants, first, second, third, fourth, and the point where both the axes meet is known as origin. Clear? Let's get some more information. Now focus here. When we draw a number line, whenever we used to draw a number line on a board or on a copy, so always at the left side we write all the negative number, at the right side we write all the positive numbers. Similarly, at the top all the positive number you can see, at the bottom, at the downside of the zero you can see the negative number, and this is the way to do. Left side of the zero always will get negative number, right side of the zero will get positive number, above the zero positive number, below the zero negative numbers. So if we talk about this portion, focus on this. First of all, let me clear one more thing. Point. Whenever we put or we will draw or we will find out the location of any point on Cartesian plane, the point will be in the form of x, y. X, y, and which is also known as ordered pair. Ordered pair. Okay. कि कार्टेशियन प्लेन में जिस भी पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट किया है, एक पॉइंट बनाया है, तो इसके अगर मुझे लोकेशन पता करना है तो मुझे उसका ऑर्डर्ड पेयर पता करना पड़ेगा. ऑर्डर्ड पेयर मींस x, y. Here x, this is known as x coordinate, and it is known as y कोऑर्डिनेट. फाइन. किसी भी पॉइंट पे जो हमेशा पॉइंट कभी भी कोई पॉइंट इस फॉर्म में नहीं होगा, y, x के फॉर्म में नहीं होगा. ऑलवेज अगर कोई भी पॉइंट है तो उसमें पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी. कैसे होगी दैट विल सी लेटर ऑन. बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पॉइंट, अ पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इसको पूरे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहली वैल्यू होती है x कोऑर्डिनेट, दूसरी वैल्यू होती है y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के कुछ स्पेशल नाम है जिसको आपको याद रखना है. x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा. x coordinate is also known as abscissa, and y coordinate is also known as ordinate. x coordinate का एक और स्पेशल नाम है दैट इज abscissa, और y coordinate का स्पेशल नाम है दैट इज ordinate. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज कार्टेशियन प्लेन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन. आपको मैंने आज इंफॉर्मेशन दी कि अगर पर्टिकुलर प्लेन हम अगर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एंड ट्रायंगल, so this plane is known as Cartesian plane. When we draw Cartesian plane, horizontal line is known as x-axis, vertical line known as y-axis. Point where both the axis का plural form axis, point
surface has been divided into 4 parts. Each part is known as quadrant. Each part is known as quadrant. Okay. And there are 4 quadrants. Anti-clockwise हमको rotate होना है. This is first, second, third, and fourth. Now, उसके बाद हम देख रहे हैं कि what is this? Means whenever we plot any point और किसी point को locate करते हैं अगर हम Cartesian plane पे, तो वो किस फॉर्म में होता है? Ordered pair. उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है ordered pair से. An ordered pair always in the form of x, y. हमेशा x coordinate पहले होगा, y coordinate बाद में होगा. x coordinate को स्पेशल नाम भी दिया गया है, that is abscissa, और y coordinate, sorry, it is not abscissa, it is abscissa, starting with a. Okay, not o. Okay, a b s c i double s a, abscissa, not abscissa. ठीक है, abscissa when it is known as ordinate, y coordinate को ordinate भी कहा जाता है. अब let's see for the next why I am discussing this. Please focus on this. अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो यहाँ x की देखें वैल्यूज कैसी है? पॉजिटिव. यहाँ y की वैल्यूज देखें कैसी है? पॉजिटिव. सो अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए इस वो कैसा होगा? प्लस प्लस. सो दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रेंट इज आल्सो नोन एज प्लस प्लस क्वाड्रेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. तो बताएं इसका क्या होगा? ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? यहाँ देखें तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है. एंड ऑलवेज वी हैव टू राइट x फर्स्ट. तो x का साइन क्या होगा? माइनस और y का साइन क्या होगा? प्लस. सो दिस इज नोन एज माइनस प्लस क्वाड्रेंट. आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते because here on pair always we have to write the value of x first and then y. So now tell me what will this what we can call this quadrant? X is negative, y is also negative. So yes, it is known as minus quadrant. And what about this? X is positive, y is negative. So that's why it is plus minus. Get it? So this is the information about this. Let's see. Now if question will be there, if suppose we have a question on which 3,4 मतलब यहां पर अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट. 3,4 if we are going to locate, we are going to find out the position of the point 3,4. In which quadrant it will lie? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में हमको मिलेगा? पता है? यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा. अभी हम प्लॉटिंग करना नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा. सो यस, इट विल लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगेन आई एम राइटिंग इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड एंड इट इज ओके. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. क्यों? बिकॉज दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव. सो प्लस 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 क्वाड्रेंट आल्सो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो इफ क्वेश्चन इज देयर कि इन व्हिच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट 3,4 will lie, so our answer will be in first quadrant. Get it? Now tell me, if suppose we have a point minus 3,1, in which quadrant we will see this point? Minus 3,1. X is negative, first is negative, second one is positive. So minus plus, yes, minus plus. So this point will lie in second quadrant. जब हम इसको प्लॉटिंग सीखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है. Get it? What about such cases? 4,0. 4,0. आप देखें 4,0. अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो फॉर गिविंग द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द Cartesian plane. Then we will discuss it again. Okay, plotting of points. Plotting of points. Plotting of points means what? कोई भी जो पॉइंट दिया है उसको कार्टेशियन प्लेन पर एग्जैक्ट लोकेशन पे. Here definitely
for this chapter you are supposed to have the graph paper. ग्राफ पेपर अगर नहीं भी है सो अगर आप अपने रूलर का इस्तेमाल करके इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की गैप पर अगर ले लेते हैं, इधर भी 1 सेंटीमीटर पे, इधर भी 1 सेंटीमीटर से, तो वो भी आप ग्राफ पेपर बना सकते हैं इफ यू आर नॉट एबल. बट इफ यू हैव द ग्राफ पेपर और इफ यू आर एबल टू अरेंज ग्राफ पेपर, इट विल बी मोर इजी फॉर यू. आप पॉइंट्स को जब लोकेट करने के बाद या पॉइंट्स प्लॉटिंग हम जब सीख रहे हैं, you must have graph paper. So try to arrange 1 or 2 or 3 graph paper from somewhere, because now market is also open, so easily you can arrange. Okay. So let's see, we are going to discuss some of the points which we need to plot. It is 0, origin, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2. It is not required that कि अगर मैं यहाँ 3 तक हूँ तो उधर भी 3 तक जाना है. It is up to you. It is depend on the point which we have to plot. It is depend on the place which you have given, which you have. So it is not required. It is not specific. -1, -2, -3. And suppose somebody is asking, plot this point 3, 4. Same point I am taking 3, 4. मुझे इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है. This is my x axis and this is my y axis. Okay, x axis, y axis. X coordinate is also known as abscissa. X coordinate जो इस फॉर्म में होता है, ये abscissa है यहाँ पर और ये coordinate है. X coordinate को ही आप abscissa बोलते हैं, तो this is abscissa is 3. एक और if question will be there, what is the abscissa of this point? So answer is 3. What is the ordinate of this point? Answer is 4. Get it? चलिए. So when we are going to plot, I am going to just clear you very simple method. Whenever we are going to plot a point on a Cartesian plane, always remember x coordinate. First value हमेशा x coordinate की होगी. X coordinate will show you from where you are supposed to start. कहाँ से आपको शुरू करना है. तो whatever the value is there, first value जो भी है आप वहां पर आके खड़े हो जाए. And आपको पता है 3 तो सर यहाँ भी लिखा है, 3 यहाँ भी है. बट ये वैल्यू किसकी है? x की है. तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, x एक्सिस वाली लाइन पे जहां 3 है वहां पर आप खड़े हो जाए आकर के. गेट इट? नाउ यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग. अब आपको चलना है इसी की सीध में, इस पॉइंट की इस नंबर के सीध में चलना है. कितना चलना है? इट इज डिपेंड ऑन द नेक्स्ट वैल्यू एंड द सेकंड वैल्यू इज 4. इट इज -4 तो नीचे चले आप, +4 है तो ऊपर चले आप. So how many steps I have to walk in front of 3? 3 की सीध में मुझे कितनी स्टेप चलनी होगी? 4. So there is 1, 2, 3 and one more I should draw here, 4. So just if you will have a graph paper, if you have a ruler, you will get this. So this is the position point supposed P. The name of the point P and the coordinates are 3, 4. This is the position of point 3, 4. और अब ध्यान से देखें आप, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है? दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. सिंपली हमने एक एग्जांपल लिया था -3, 1. इसको देख लेते हैं. सो -3, 1. x की वैल्यू हमेशा बताएगी कहां से शुरू करना है. सो आई हैव द वैल्यू ऑफ x इज abscissa जो है वो -3 है, तो हम -3 पर आके खड़े हो गए. अब हमें चलना है. कहां चलना है? हमें चलना है 1 स्टेप. अगर ये नेक्स्ट वाला नंबर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ और नेगेटिव है तो नीचे की तरफ. तो कितनी स्टेप -3 की सीध में हम चलेंगे? 1 स्टेप पॉजिटिवली. दैट्स व्हाई अबोव द x एक्सिस 1 स्टेप. तो इसके ठीक सामने यहां पर जाएंगे. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट -3, 1. सपोज आई हैव गिवन द नेम एज q. और देखिए कौन से क्वाड्रेंट में बना है वो? सेकंड. क्यों? क्योंकि ये -+ क्वाड्रेंट है. Getting or not? This is the concept of plotting. अब बात करते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो क्या? सपोज 0,3. एक क्वेश्चन आया आपके पास. क्वेश्चन पहले नॉर्मली आया, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल लाई. तो पता नहीं, चलो करके देख लेते हैं. अगेन पहली वैल्यू आपको क्या बताएगी कि कहां से शुरू करना है? 0 स्टेप. सो 0 से शुरू करना है. कितनी स्टेप जाना है? 3. अप साइड और डाउन साइड वो डिपेंड करेगा इसका साइन क्या है. साइन
suppose I have given name as 0,3. अब आप बताएं ये 0,3 यहां पर बना ली, ये यहां पर है, कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में या सेकंड में? ये तो बॉर्डर पे आ गया है. So always remember whenever we have any of the coordinate 0, x coordinate या y coordinate अगर 0 होगा तो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा. This point lie on कहां है देखो y axis. ये पॉइंट आपका y axis पे बना है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं. सिमिलरली अगर मेरे पास पॉइंट है -2,0, चलो देखते हैं. पहली वैल्यू है -2, तो आई एम हियर -2 और कहां जाना है, 0 स्टेप. 0 स्टेप आपको चलना है. अगर आप किसी प्लेस पे खड़े हैं, आई विल टेल यू प्लीज स्टार्ट वॉकिंग 0 किलोमीटर और 0, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप, you will stand at that same place only. So that's why -2 पे जाके कहीं नहीं जाना है, because next is 0. So this is the location or this is the position of the point. Suppose I have given the name as P -2,0. पता है पॉइंट कहां बना है? This point is lying on x axis. Lie on x axis. तो एक चीज और आपने सीखी कि अगर किसी भी पॉइंट का x या y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्सिस पे होगा. कौन सा टर्म होगा उसके लिए मैं आपको एक नोट यहां पर मेंशन करता हूं. ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0. अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, जैसे यहां था, ये देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे बनेगा. एंड ऑन y एक्सिस अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसमें x इक्वल टू 0 होगा. सी यहां x कोऑर्डिनेट 0 था तो पॉइंट का बना y एक्सिस पे, यहां y कोऑर्डिनेट 0 था, पॉइंट का बना x एक्सिस पे. सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन प्लेन. One very simple topic is also remaining of this chapter, otherwise we are going to finish this chapter. Okay, so that we will discuss in the next video. Today we have discussed about the Cartesian plane. Horizontal line, x axis is known as horizontal line, y axis is known as y, or this vertical line is known as y axis. Point where both the axes meet is known as origin. These blocks are known as quadrant. First, second, third, fourth. It is also known as plus plus, minus plus, minus minus, and plus minus, because as per the area, it is positive, it is also positive, that's why it is plus plus. This we have seen. Also we have seen this whatever the points we are going to plot on the Cartesian plane, it will always in the form of ordered pair. Ordered pair में first value हमेशा x coordinate को represent करती है और ये y coordinate को. X coordinate is also known as abscissa. ABSCISSA. Okay, abscissa. And y coordinate is also known as ordinate. Okay. And at the last we have seen how to plot the points and how to find the position of the point. कोई भी point अगर दिया है पूछा कि कौन से quadrant में होगा तो वो आपको बता सकते हैं, उसके साइन को देख कर बता सकते हैं. बट अगर 0 है, if y is 0, the point y coordinate 0 है, then point will lie on x axis. If x is 0, the point will lie on y axis. I hope it is very much clear from my side. I am going to provide you one worksheet. Please solve. Thank you.